तो बच्चों अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत होती है इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया है। What could be the other effects of electric current? तो दूसरे effects क्या हैं? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. और हमने देखा है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो मैग्नेट की तरीके से भी बिहेव करता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। So let us perform the following activity to reinforce it. क्योंकि साइंस में हर चीज का एक एक्सपेरिमेंट होता है, हर चीज का एक एविडेंस होता है, हर चीज को प्रूव किया जाता है। इसलिए यहाँ भी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हम ये शो कर पाए कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है वो वाकई में एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो एक्टिविटी 13.1 हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो यहाँ आप ये देख रहे हैं एक्स और वाई के बीच में हमने थिक कॉपर वायर लगा दिया जो कि ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर 13.1, the wire XY is kept perpendicular to the plane of paper. तो जो पेपर है उसके परपेंडिकुलर हमने ये रखा है। Horizontally place a small compass near to this copper wire. See the position of its needle. और इसके हॉरिजॉन्टल में हमने एक कॉपर वायर प्लेस की हुई है और इसकी जो नीडल है उसको हम देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। ठीक है, आगे लिखा है pass the current through the circuit by inserting the key into the plug. Observe the change in the position of the compass needle. तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं करंट पास होने लगता है, वैसे ही ये जो मैग्नेटिक कंपास हमने यहाँ रखी है जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि वो अपनी जगह से मूव होगी। और ये मूवमेंट क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक ये जो निडल है कंपास की, मैग्नेटिक कंपास की, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। कोई रीजन ही नहीं है डिफ्लेक्ट करने का। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus, we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then, what about the reverse possibility of an electric effect of the moving magnet? Okay? अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो अगर मूव होती है, यानी कि इसमें डिफ्लेक्शन नजर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि कंडक्टर के थ्रू जैसे ही हमने करंट पास किया वैसे ही वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी वो रिफ्लेक्ट हुई। अब वो एक और इसमें मतलब पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि ठीक है, करंट पास होने से अगर मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है फाइन। वो कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी कि मैग्नेट का मूवमेंट करा जाए, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मूवमेंट हो, तो उसका क्या इफेक्ट, ठीक है। तो in this chapter we will study magnetic fields and such electromagnetic effects. We shall also study about electromagnets and electric motors, which involve the magnetic effect of electric current, and electric generators, which involve the electric effect of moving magnet. ठीक है। तो यहाँ हम एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि जब करंट पास होता है किसी कंडक्टर के थ्रू तो किस तरीके से वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जब मैग्नेट मूव होती है तो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट, ठीक है। इसके बाद ये हैंस क्वेश्चन और स्टेट के बारे में दे रखा है, तो ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वी skip this portion. Okay. बाकी if you want to read yourself you can, क्योंकि साइंटिस्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है उसमें। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो फील्ड लाइंस है उसके बारे में। तो यहां हमें दे रखा है, देखिए, we are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. The end of the compass needle point approximately towards north and south directions. The end pointing towards north is called north seeking or north pole. The other end that points towards south is called south seeking or south pole. Through various activities, we have observed that like poles repel while unlike poles of magnets attract each other. ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हमने की है, हमने देखा है, और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो लाइक पोल्स हैं मैग्नेट के, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ, वो रिपेल करेंगे, जबकि जो अनलाइक पोल्स हैं लाइक नॉर्थ और साउथ वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार। ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक सिंपल सा आंसर होगा, तो साथ ही साथ ही कर लेते हैं, अलग से क्या करेंगे इसको। इसके आंसर में बच्चों आप लिख सकते हो, देखिए इसके आंसर में लिखा जा सकता है द मैग्नेटिक फील्ड of the magnet
exerts force on both the poles of the compass. ठीक है, compass needle. The forces experienced by the two poles are equal and opposite. These two forces form a couple which deflects the compass needle. It deflects the compass needle. Compass needle. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है. The magnetic field of the magnet exerts force on both the poles of the compass needle. The force experienced by the two poles are equal and opposite. These two forces form a couple which deflect the compass needle. ठीक है, ओके. इसके बाद एक्टिविटीज 13.2 दे रखी है हमें, और 13.2 एक्टिविटी में अगर हम पढ़ें तो लिखा है फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर on a drawing board using some adhesive material. ठीक है, place a bar magnet in the center of it, sprinkle some iron flint uniformly around the bar magnet. A salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस टाइप की शेप हमें नजर आएगी जो यहाँ इन्होंने बना के दे रखी. ठीक है, तो आयरन फ्लिंग नियर द बार मैग्नेट अलाइन themselves along the फील्ड लाइन्स. तो जो आयरन फ्लिंग है वो फील्ड लाइन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर ले. तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके की. तो ये जो शेप आपको नजर आ रही है ठीक इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. समझ आया? आगे बढ़ते हैं. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द आयरन फिलिंग अरेंज themselves in a pattern as shown in the figure 13.2 अभी हमने देखी थी. Why do the iron filling arrange in such a pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron filling experience a force. The force thus exerted make iron filling to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field.
The lines along which the iron flings align themselves represent magnetic field lines. ठीक है, तो ये जो शेप है, ये शेप बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलाइनमेंट में अपने आप को लेके आएगी। ओके, आगे लिखा है आफ्टर सॉरी आर देयर अदर वेज of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, you can yourself draw the field lines of a bar magnet. तो अगर आप चाहें तो खुद अपनी बार मैग्नेट की फील्ड लाइन बना सकते हैं। आपको करना क्या, उसके लिए एक एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, एक्टिविटी 13.2 है, ये आप परफॉर्म करो और अपनी बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप खुद ब खुद ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहले टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, place the magnet on a sheet of white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. Mark the boundary of the magnet. Place the compass near the north pole of the magnet. And how does it behave? The south pole of the needle points toward the north pole of the magnet. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet, क्योंकि जो लाइट पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइट पोल हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, तो वही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद आपने करना है, देखिए mark the position of two ends of the needle. Now move the needle to a new position such that its south pole occupies the position previously occupied by its north pole. ठीक है, यानी कि आपने जो बार मैग्नेट थी पहले जो यहाँ थी, अब आपने यहाँ रख दी, फिर आपने यहाँ रख दी, फिर आपने यहाँ रख दी, तो होगा क्या है कि जो मैग्नेटिक जो निडल है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और ये एक शेप बन जाएगी। ये जो शेप है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती है। समझ आया? तो यही हम इसमें करने वाले हैं। मैं आगे पढ़ रहा हूँ, अब देखो ध्यान से। तो इन दिस वे proceed step by step till you reach the south pole of the magnet as shown in the figure 13.3. Join the points marked on the paper by a smooth curve, and this curve represents a field line. ये जो कर्व है ये फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, आगे लिखा है repeat the above procedure and draw as many lines as you can, and you will get pattern shown in figure 13.4. These lines represent the magnetic field around the magnet, and these are known as magnetic field lines. Okay, observe the deflection in the compass needle as you move it along field lines. The deflection increases as the needle is moved towards the pole. यानी हम कह सकते हैं कि जो पोल के अराउंड, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड जाता है। ओके, तो ये दूसरा भी होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करने का। ठीक है,
तो एक तो वो पहले जो हमने एक्टिविटी की थी जिसमें एक मैग्नेट लिए और आयरन फिलिंग को उसके ऊपर रख के और थोड़ा सा टैप किया तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक पैटर्न मिला। और दूसरी एक्टिविटी जिसमें हमने कंपास निडल को मूव किया अलग अलग पोजीशन पे और उससे जो कंपास निडल की जो पोजीशन चेंज हुई उसके बेसिस पे हमने फील्ड लाइन बनाई। ठीक है, आगे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि ये है वेक्टर क्वांटिटी। The direction of a magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. Note the arrows marked on the field lines in figure 13.4. Inside the magnet, the direction of field lines is from its south pole to its north pole. Thus, the magnetic field lines are closed curves. ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेगी मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से कंप्लीट सर्कल हो। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, that is, the force acting on the pole of another magnet place is greater where the field lines are crowded. See figure 13. No two field lines are found to cross each other. If they did, it would mean that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज्यादा क्लोज नजर आएंगी क्योंकि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो पोल्स पे ज्यादा होती है और नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगी, आउटसाइड द मैग्नेट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ मूव करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने सीधे सीधे मैग्नेट डिस्कस किया है और अब हम करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो भी एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो देखिए in activity 13.1 we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity in the following way. ठीक है, तो एक बार दोबारा एक्टिविटी करनी पड़ेगी नए तरीके से जिससे कि हमें फील्ड लाइन का पैटर्न मिल सके। ये देखिए ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी में ले रखा है कि टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 or 3 cells of 1.5 volt each and a plug key. Connect all of them in series as shown in the figure 13.5. तो नीचे एक फिगर दे रखी है उसमें आपको ये नजर आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, थोड़ी सी और ऊपर करेंगे तो फिर और नजर आएगा। Place the straight wire parallel to and over a compass needle. Plug the key in the circuit.
Observe the direction of deflection of the north pole of the needle if the current flows from north to south, as shown in the figure 13.58. The north pole of the compass needle would move towards the east. Okay. थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो फिगर पूरी क्लियरली नजर आएगी. Okay. Now replace the cell connections in the circuit as shown in the figure 13.5p, and this would result in the change of the direction of current through the copper wire, that is from south to north. Observe the change in the direction of deflection of the needle, and you will see that now the needle moves in opposite direction, that is towards the west. Figure 13.5b, it means that the direction of magnetic field produced by the electric current is also reversed. तो जैसे हम डायरेक्शन जो है करंट की उसको रिवर्स करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स होगी. ओके. तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन के साथ कनेक्टेड है. ओके. आगे देखिए आगे क्या लिखा है. आगे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. What determines the pattern of magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? इसका आंसर yes है, and we shall investigate this with an activity. We shall first consider the pattern of the magnetic field around a straight conductor carrying current. Activity है 13.5. देखो क्या लिखा है. लिखा हुआ है टेक अ बैटरी 12 volt, a variable resistance or a rheostat, an ammeter 0 to 5 ampere, a plug key connecting wire, and a long straight thick copper wire. Insert the thick wire through the center normal to the plane of a rectangular cardboard. Take care that the cardboard is fixed and does not slide upward. ठीक है. तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. अब देखिए करना क्या है. ये देखिए ये फिगर आपको नजर आ रही है. तो यहाँ जब आप देखेंगे कि connect the copper wire vertically between the points X and Y as shown in the figure 13.6a in series with the battery, a plug, and sprinkle some iron filling uniformly on the cardboard. You may use a salt sprinkler for this purpose. Keep the variable of the rheostat at a fixed position and note the current through the ammeter. Close the key so that the current flows through the wire. Ensure that the copper wire placed between the point X and Y remains vertically straight. Gently tap the cardboard a few times. Observe the pattern of the iron flings. You would find that the iron filling align themselves, showing a pattern of concentric circles around the copper wire. यानी इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में.
ओके, आगे क्या लिखा है? What do these concentric circles represent? They represent the magnetic field. How can the direction of the magnetic field be found? Place a compass at a point, say P, over a circle and observe the direction of the needle. The direction of the north pole of the compass needle would give the direction of the field lines produced by the electric current through the straight wire at point P. Show the direction by an arrow. Does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed? तो आंसर होगा यस, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो डिपेंड करेगा कंडक्टर की शेप। ओके, ये इसका पूरा सार है। आगे लिखा है कि what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed. To see this, vary the current in the wire and we find that the deflection in the needle also changes. In fact, if current is increased, the deflection also increases. It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. ठीक है, इसके आगे देखिए क्या लिखा है। इसके आगे बच्चों लिखा है कि what happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire, but the current through the wire remains the same. To see this, now place the compass at a further point from the conducting wire, say at point Q. What change do you observe? We see that the deflection in the needle decreases. Thus, the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. From figure 13.6, it can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around the current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it. और सर्कल जितना बड़ा होगा यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, ओके, इसके आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे बच्चों एक रूल लिखा है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपके बहुत काम आने वाला ये रूल है। देखो क्या लिखा है। A convenient way of finding the direction of magnetic field associated with the current carrying conductor is given in figure 13.7. तो राइट हैंड थंब रूल है, ये बहुत आसान है। आप अपना राइट हैंड लो और उसमें जो थम्स अप जैसा सीन है वैसा आपने बना, यानी थंब को ऊपर रखना है और फिंगर्स को फोल्डेड रखना है। तो देखिए, imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of current. Then your finger will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field, as shown in the figure 13.7, and this is known as the right hand thumb. Okay, तो ये आसान सा थंब रूल है, ये आपको याद रखना है कि अगर हम थम्स अप जैसी पोजीशन में अपने राइट हैंड को रखते हैं
तो जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारी फोल्डेड फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला दे रखा है कि भाई ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो इसमें तो जो जैसे पीछे फिगर हमने देखी थी वही पिक्चर आपको बनानी है। तो एक बार मैग्नेट लेनी है आपने और उसके अराउंड फील्ड लाइन बनानी है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली पिक्चर थी वो। यस, ये वाली। तो आपने कुछ नहीं करना, ये वाली पिक्चर बना देनी है और क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखें। तो क्वेश्चन 2 में है, देखिए क्वेश्चन 2 है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसा कि जब हम रीडिंग कर रहे थे तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो वही सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने वर्ड्स में लिखनी है। ठीक है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या लिखेंगे आप, देखिए। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें नंबर 1 में आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from originate from the north pole of a magnet and and at its south pole। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप इसके लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइन magnetic field lines become closer to each other near the poles, near the poles, okay, of a magnet, but they they are widely widely separated at other places, at other places। ठीक है, यानी कि पोल्स पे नजदीक होती हैं और बाकी जगह थोड़ा सा दूर दूर होती है। और इसी तरीके से थर्ड पॉइंट इसका आप लिख सकते हैं द टू द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect, do not intersect one another, okay, one
another. ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, समझ आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो हमने लिखा था लास्ट का पॉइंट, उसी को इन्होंने पूछा है कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है, तो ऐसे क्यों में आप आंसर लिख सकते हो। इस केस में आप लिख सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the resultant force on a north pole at any point can be only in one direction, only in one direction. But if the two magnetic field lines intersect one another, then the resulting force on north pole placed at the point of intersections will be along two directions, which is not possible. Not possible. ओके, तो ये आंसर इसका लिखा जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके आगे हम नेक्स्ट जल्दी ही मिलने वाले हैं। ओके, तो जहां तक मैंने कराया है वहां तक आप एक बार रिवाइज करो, अच्छे से चीजों को कंप्लीट करो, और उसके बाद फिर नया करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।